Hello everyone. Welcome back to the day two of the session. Hope you like the day one. So, let us start today. As we discussed in the roadmap, we will cover IoT and its use cases and platforms. So, this session is again gonna be really interesting. Just type a hello or hi in the chat box to show your excitement. Yep, hi guys. These are the main IoT platforms that are in the slides, like Blink, Arduino IoT, Firebase, Amazon Web Services IoT platform, Microsoft IoT Hub, and many other. Google also has its own IoT cloud platform. But today we will only cover about Blink, Arduino IoT Cloud, and Firebase. We will see some projects based on Arduino IoT and some home automation projects too. So let me pass on to Rahul, who will tell you about the wireless microcontroller boards. Hello everyone. Yesterday we have discussed more on Arduino, which is a whiteboard. Let me share my screen. Okay, so this is Arduino, which is wired, which does not have Wi-Fi. So today we are discussing more on this little board, which is ESP8266. So basically, the board which we have seen in PPT. Please turn on the PPT. Okay, so this ESP8266 board is a development board, and it is a low-cost Wi-Fi microchip, and it can perform various tasks. And here we also have an ESP32 board with us. It is more powerful. Like yesterday we have discussed Arduino Uno and Arduino Mega. These are they're similar. Similar like this ESP8266 is similar to Arduino Uno, and ESP32 is similar to Arduino Mega. It has more power and more pins. It also has a Bluetooth connected with it. So it has Wi-Fi and Bluetooth in it. So basically, we have seen that Arduino is also a development board. So the main chip is this Atmega 328P, and in Node MCU, it is this chip ESP8266, which does the most work. Okay, so now we can discuss IoT use cases. What is IoT? It is connection of things. We are connecting many things to internet, and then we can control them and monitor them. So here we have like in this diagram, we have some lights, some microprocessors connected through the internet, and then we can store the data and then process it. So this is IoT, that we are getting data from somewhere. We have sensors some other place in the world, and we are collecting all the data and we are processing it. This is basically IoT. Okay, so what is building block of IoT? Like we have to make a system, like home automation system. So there are many things which consist of sensors and actuators, and these are connected to a local network, like Wi-Fi of our home, which through a gateway like a Wi-Fi hub is connected to the internet. And over internet, there are many back-end services like Blink, Arduino IoT, Firebase, through which we can control them with our phone or our voice. And we can analyze the data, like how much time the LED bulb was on, how much bill it will take, and we can do analytics over it. Okay, so over where we can use IoT. IoT is used everywhere. So it is used in industries to monitor the robots, over which things they are working, over logistics, how much uh, material we are having, and where the things are currently. It is also used in farming, like we use soil moisture sensor, like we have demonstrated yesterday. They use IoT, like over whom we can see how much
what is there in the farm, how much humidity is there, and we can control things from anywhere in the world. Okay, so benefits of IoT. With IoT, we can monitor overall business process. Like over sitting in home, we can control our business. Like we can connect cameras, IP cameras, which we can see from our home. आजकल आते भी है जैसे वाईफाई वाले कैमरे आते हैं जिससे हम घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं कहीं का भी. सो दिस मेक्स थिंग्स वेरी इजी एंड easy for us, and it improves customer experience also. लाइक कि अगर हम कोई चीज़ ऑटोमेट करते हैं तो उससे कस्टमर को भी आसानी होती है करने में. इट ऑल्सो सेव्स टाइम एंड मनी. लाइक देयर मैनी थिंग्स जिसमें पहले बहुत ज़्यादा टाइम और मनी लगता था, अब जो ऑटोमेट हो जाती है फिर उसमें बहुत कम टाइम लगता है और मनी लगता है. इट एनहांसेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता ही है. एंड वी कैन इंटीग्रेट दिस इन मैनी बिजनेस मॉडल्स. आईओटी को हम जैसे कहीं पे भी इंटीग्रेट करके उसको बेटर कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. तो स्मार्ट होम. द IoT can be used in smart home. Like I have made a project on smart home, which I will show you right now. Okay, so I've integrated the ESP8266 board in my uh, whiteboard, and so now I can control it over internet from any place. I am Google Home app through which I can control appliances. I hope you can see this. Like I can turn on and off lights, and fan. Let me show you this. So right now the fan is switched off. Now when I will turn it on from the phone, and now it has start working. Similarly, we can do for end device. Like now the tube light is off. Okay, so ठंड हो रही है तो मैं फैन बंद कर दूंगा. And now it is off. So I can also control it with my voice. Like, okay Google, turn on the fan. All right, turning the fan on. Okay, so I can control it using this also. Let me turn it off. Okay, so I can also I have programmed a party mode in it. Like when I will say, okay Google, party mode, then it will play some music. हर बच्चा अलग है और उनके सपने अलग हैं. And I integrated in live. I hope you can see this. So let me now turn on the light. Okay Google, turn on LED bulb. All right, turning on the LED bulb. Okay, so this was my home automation project. Uh, so I have made this using ESP8266 and integrated it in my home board.
So the light. Okay, let me show you the circuit. I think you can see a node MCU board here, which is controlling this light, which uh, which is actually a voice control light. So when the music plays, it turns on accordingly. So here's the node MCU board, which is connected to the light and controls it over Wi-Fi. So I have not done anything. This is the benefit of IoT. We can attach multiple devices and then integrate them. So it makes a very good system. Like I programmed party mode. It turns on the light uh, and music, and this music light मतलब एक साथ में ही सारी चीज़ें हो जाती है, तो ये इंटीग्रेशन जो इसमें मिल जाती है हमको आईओटी में, वो उसकी इसकी बेस्ट बात है। हम इससे एनालिटिक्स भी देख सकते हैं कि कितनी देर लाइट चल रही है, क्या है। एंड ओके, लेट मी कंटिन्यू, लेट गेट बैक टू द पीपीटी। ओके, सो हमने स्मार्ट होम तो देख ही लिए, होम ऑटोमेशन वाला पार्ट। एंड इससे हम लाइट सीनिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकते हैं। पीपीटी विजिबल है? ओके, सो हम इससे लाइट नहीं, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक हमने म्यूज़िक भी देखा, अभी हमने म्यूज़िक भी कंट्रोल किया। दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कंट्रोलिंग फायर। लाइक हम इसमें गैस सेंसर लगा सकते हैं या आईआर सेंसर लगा सकते हैं जो गैस डिटेक्ट करे, एंड देन ऑटोमेटिकली कॉल्स फायर पुलिस एंड कैन परफॉर्म लाइक CO2 गैस निकल जाए, एंड ऐसे करके हम काफ़ी सारे ऑटोमेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी में भी काम आता है, लाइक हम आईपी कैमरा लगा सकते हैं जिससे, और उसमें हम मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगा सकते हैं कि कोई बंदा अगर अंदर घुस जाए तो हमारे पास मैसेज आ जाए। ऐसे करके हम आईओटी को सिक्योरिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। लिफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं कि हम उसमें टाइमर लगा दें कि जैसे मैं ऑफिस से 2:30 बजे आता हूँ, तो वो मेरे को पहचान ले एंड 2:30 बजे लिफ्ट मेरे को मेरे वाले फ्लोर पे लेके चल जाए। ऐसे हम फेस रिकॉग्निशन की हेल्प से काफ़ी सारे ऐसे ऑटोमेशंस कर सकते हैं। HVAC, that this is basically controlling humidity and air conditioning, and टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप ह्यूमिडिटी एंड एयर कंडीशनिंग हो जाती है। ये भी ऑटोमेशन हम कर सकते हैं आईओटी की हेल्प से। Okay. ओके, सो Hello guys. Um, वी हैव युवराज फॉर एक्सप्लेनिंग आर्डिनो आईओटी। so hello guys. Am I audible? आवाज आ रही है ना? यस सर, नो सर लिख दो यार चैट में। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्डिनो आईओटी। अब बेसिकली हमने देख लिया कि उसमें होम ऑटोमेशन करते हैं तो हम फोन से लाइट ऑन कर दी या फिर बल्ब ऑन ऑफ कर दिया, फैन चला लिया। बट बेसिकली हाउ वी यूज इट, कि हम स्टार्ट कैसे करें, कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें। लाइक उसने गूगल होम यूज करा नाउ, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल एक्सप्लेन यू आर्डिनो आईओटी। आर्डिनो आईओटी क्लाउड भी एक आईओटी के लिए एक सर्विस है जो कि आर्डिनो ने प्रोवाइड करी है। लेट मी शो यू द स्क्रीन, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि वेबसाइट कैसी है। ओके, सो स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, सो दिस इज आर्डिनो का मेन वेबसाइट, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि मेन वेबसाइट पे जाके तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन, क्लाउड, सॉफ्टवेयर, कुछ भी जो भी तुम लोगों को आर्डिनो वगैरह सीखना हो तो तुम लोग यहाँ से कर सकते हो। तो इसमें तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रेफरेंसेस के अंदर जाके तुम लोग कोई भी तुम्हें कोड वगैरह लिखना है तो नेटिव वगैरह तुम सब यहाँ से निकाल सकते हो। इनके रेफरेंसेस के अंदर जाके कोई भी हेल्प चाहिए हो। तो बेसिक आते हैं हम आर्डिनो क्लाउड के ऊपर। आर्डिनो क्लाउड का ये है हमारे पास मेन, हमारा जो फर्स्ट यूआई आता है। तो यहाँ पे हमें
आर्डिनो आईओटी बेसिकली यूज करना काफी इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड आईडीई मिल जाती है। लाइक तुम्हें बस एक वेरिएबल्स ऐड करने हैं। वेरिएबल्स क्या हो गए, लाइक तुम अभी हमारे पास एक बजर की एग्जांपल जैसे दिख रही है, तो बजर ऑन या ऑफ होगा तो एक का बुलियन हो गया, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो दैट आर वेरिएबल्स इन दिस केस ऑफ कि हम या तो ऑन करेंगे तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ऑफ करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो दीज आर वेरिएबल्स। नेक्स्ट थिंग आती है कि जब तुम वेरिएबल सेट कर लोगे आर्डिनो के अंदर, देन तुम्हारे पास एक स्केच की ऑप्शन होगी। आर्डिनो आईओटी का ये बेस्ट फीचर है कि दे प्रोवाइड यू द कोड, कि जो बेसिक कोड है तुम्हारे पास, तुम्हें सारा कोड नहीं लिखना, तुम्हें ये सारा कोड वो लिख के खुद देंगे। एंड एट द एंड तुम्हें बस एक ये इफ एल स्टेटमेंट लिखनी होगी, लाइक ऑन बजर चेंज। इसके बाद तुम्हें जो भी काम करना है उसके बाद वो चीज तुम्हें कोड लिखना होगा छोटा सा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है इसके आर्डिनो आईओटी के, दैट दे प्रोवाइड अ फुल एडिटर। लाइक देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फुल एडिटर। तो तुम लोग यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर आईडीई खुल जाएगी विद इन विच ईच एंड एवरी लाइब्रेरी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो तुम्हें बाहर से कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है जो कि आर्डिनो के अंदर चाहिए हो। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। सेकंड फीचर इसके अंदर आता है कि देन देयर इज एन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हम जो भी हमें कंट्रोल करना है, तो लाइक यहाँ पे मुझे यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बजर कंट्रोल करना है, तो हमने एक स्विच ऑन करा, स्विच क्रिएट करा यहाँ पे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे तुम्हारे पास बहुत सारी विड्थ होती हैं कि जो तुम लगा सकते हो, कि लाइक बटन लगा दिया, स्लाइडर्स लगा दिए, ग्राफ, लाइक लेट मी शो यू दिस थिंग। तो सी दिस, दीज आर ऑल द विड्थ जो कि हमें आर्डिनो प्रोवाइड करता है। तो एक और बढ़िया चीज है इस आर्डिनो की, लाइक दे प्रोवाइड द कूल विड्थ फॉर फ्री। बाकी अदर जो भी आईओटी सर्विसेज हैं, लाइक ब्लिंक हो गया, प्रोजेक्टर, माइक्रोसॉफ्ट एजर, दे प्रोवाइड बेसिक विड्थ, बट जो थोड़ी सी हाई लेवल होती हैं, लाइक चार्ट्स वगैरह हो गए, ग्राफ ग्राफ बनाने हो गए, मैप हो गया, ये सब वो पेड चीजें होती हैं उनमें। तो आर्डिनो आईओटी के अंदर ये सब चीजें और फ्री हैं। तो बेसिक इसके अंदर कोड भी तुम्हें पहले से मिलेगा, उसके बाद तुम्हें बस उसको उसके अंदर लिखना है, और उसके बाद तुम लोगों को स्टेटस वगैरह ये सारा यूआई यूएक्स आर्डिनो आईओटी का काफी सही है। तो अब रविंदर, now Ravinder will show you he can control also। जैसे राहुल ने तुम लोगों को घर के अंदर कंट्रोल करके दिखाया, तो आईओटी इज नॉट लाइक कि तुम लोग अपने एरिया के अंदर 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 ही कंट्रोल कर सकते हो। ये ऐसा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज बेसिकली कि तुम लोग कहीं भी दुनिया के कोने में बैठे हो, तुम किसी दूसरी जगह पे इंटरनेट के हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो। तो विल शो यू दैट। रविंदर, आर यू देयर? हाँ, Yes, तो I am. रविंदर Uh, स्क्रीन शेयर करके yep. So ये मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया। इसमें स्क्रीन विजिबल। हाँ, तो हम आर्डिनो आईओटी क्लाउड पे जाएंगे और बस डॉक्स पे नहीं, क्लाउड आर्डिनो डॉट सी सी पे यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे, और उसके बाद जस्ट लॉग इन। वो मेरा लॉग्ड इन है तो फिर यहाँ पर आ रहा है। आईओटी क्लाउड पे जाने के बाद यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट वगैरह बना रखा होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा डैशबोर्ड पे। तो टेस्ट 1 में जैसे बजर बना हुआ है, तो साथ में कैमरा आ रहा है। हाँ सी ऑन करियो। सो इफ आई ऑन दिस बजर, सो लाइक यू कैन सी कि वो रविंदर जलंधर में बैठा हुआ है एंड आई एम इन गुरुग्राम। so he can control this ESP board and ये LED एंड buzzer आर ओनली लाइक लोड्स। तो यहाँ पे तुम रिले कनेक्ट करके तुम फैन जैसे उसने राहुल ने कनेक्ट करे हुए थे, तो यू कैन कंट्रोल these all stuff from anywhere। so this is the beauty of this IoT basically। so all these things you can do easily। like blink की एग्जांपल तो काफी इजी थी, तुम लोग जस्ट यू हैव टू सेट अ वेरिएबल एंड उसके बाद आर्डिनो तुम्हें खुद कोड लिख के देगा। एंड ऑल्सो वन मेन थिंग इन दिस कि यू हैव टू डाउनलोड दिस, देयर इज एन सॉफ्टवेयर कॉल्ड आर्डिनो एजेंट। तो आर्डिनो एजेंट साथ में ही ऑप्शन आती है डाउनलोड करने की। तो तुम उससे सीधा ब्राउजर से ही कोड अपलोड कर सकते हो अपने किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर।
So also like in other services you have to copy paste code in another IDE and then तुम्हें अपलोड करना होता है. तो यहाँ पे ऑनलाइन आईडी मिलती है, तुम अपलोड भी कोड को सीधा ब्राउजर से सीधा अपने यहाँ पे बोर्ड के अंदर कर सकते हो. So that is also one of the main features of Arduino IoT Cloud. So next over to Ravinder about Firebase. So let us we have seen the LED getting controlled remotely, so let us see now what Firebase is. So Firebase provides you a platform for easily just the developers don't have to do a lot of code. They can use the features like analytics, authentication, database configuration, file storage, messaging, and also the notifications in real time. So the thing is that like one device detects something and all other device gets notified about the same thing. So the difference between traditional other softwares and Firebase is that द एप्स इन दिस एक एपीआई को कॉल करते हैं और वो एपीआई जो होती है वो एक सर्वर्स पर होस्टेड होती है और उसके बाद जो डाटा है वो सारा डेटाबेसेस में या क्लाउड पर जाता है किसी एसडीके के थ्रू. तो फिर हमें पहले बीच में सर्वर्स भी चाहिए, एपीआई को भी कॉल करना पड़ता है. और फायरबेस के वक्त हम क्या करते हैं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यूज़ करते हैं लाइक फ्लटर, कोई भी कॉटलिन वगैरह या समथिंग जिसमें भी हमारा ऐप बना है या फिर वेब पेज. तो वो उससे हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली फायरबेस पर डाटा सेंड कर देते हैं. फंक्शंस होते हैं फायरबेस के खुद के, तो हम डायरेक्टली फायरबेस के पे डाटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं वैसे ही क्लाइंट ऐप्स में. तो हमारे पास जैसे ई एस पी 8266 है और ई एस पी 32, दोनों से हम क्या कर सकते हैं कि पुश कर सकते हैं डाटा रियल टाइम डाटाबेस में. और उससे क्या होएगा कि फायरबेस के ऊपर रियल टाइम में चला जाएगा और उससे जितने भी क्लाइंट्स को नोटिफाई करना होगा वो हम कर पाएंगे और उनको फिर डाटा भेज सकते हैं हम उसी वक्त. तो मैं दिखा देता हूँ फायरबेस पे कैसे सेटअप करते हैं. तो firebase.google.com है, यहाँ पर जाना है और साइन अप करने के बाद गो टू कंसोल पे क्लिक करना है, एज सिंपल एज दैट. और गो टू कंसोल पे क्लिक करने के बाद लाइक कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. जैसे ESP32 नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो कंटिन्यू करके हम इसमें रिकमेंडेड है एनालिटिक्स, तो हम इसे ऑन ही रहने देंगे और डिफॉल्ट फायरबेस अकाउंट क्रिएट प्रोजेक्ट. जस्ट 3 के क्लिक्स और एक नया प्रोजेक्ट बन गया हमारा. तो ये काफ़ी क्विकली होता है. जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड. सो वी विल कंटिन्यू. और ये हमारा असल में कंसोल होता है पूरा का पूरा. इसके ऊपर हमारे पास जैसे प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू दे रखा है यहाँ पर, और फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशंस हैं. तो यहाँ पर अगर हम ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है हमारे अपने ऐप के अंदर, हमें कुछ भी डालना है लाइक ईमेल से या किसी भी चीज़ से, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. बस हमें इनेबल करनी होंगी चीज़ें. और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर कोई भी ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक, कैसा भी साइन इन डाल सकते हैं. और फायरस्टोर डेटाबेस है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि मतलब एक तरह से स्टैटिक डाटा जो होता है, कोई रियल टाइम में नहीं होएगा. ये जैसे डाटा आएगा फिर उसके बाद रीड करेंगे इसको तभी अपडेट करेगा हमारे ऐप्स के अंदर. रियल टाइम डाटाबेस है जो उसी वक्त अपडेट हो जाएगा. तो हमें मेनली यही यूज़ करना होगा. तो यहाँ पर सिंपल है, क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट करके लॉक्ड मोड या टेस्ट मोड किसी में भी चला सकते हैं. बाद में हम ये परमिशंस तो एडिट कर ही सकते हैं, तो इनेबल कर देते हैं. तो ये हमारे पास ऐसा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. सो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारे पास. तो यहाँ से फिर हम टोकन्स वगैरह इसकी सेटिंग्स में जाके, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में टोकन होता है, वो टोकन को ये वेब एपीआई की, ये एपीआई की को हम अपने आर्डुइनो आईडी में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. वो काफ़ी फिर उसके लिए डिफ़िकल्ट से फंक्शंस है, बिगिनर्स फ्रेंडली नहीं है वो. तो वो हम आगे आने वाली वर्कशॉप्स में सारा सीखेंगे कि कैसे आर्डुइनो आईडी से हम ईएसपी को कंट्रोल कर सकते हैं पूरा ऑनलाइन आईओटी से. तो अभी के लिए हम एक वीडियो देख लेते हैं इसके रिलेटेड. जस्ट अ सेकंड.
Let me switch the tabs. So is my tab visible? Yeah. So this is a quick example of how it works. Like in real time, we are changing the LED status from 0 to 1, and it will glow the LED that is on ESP module. So this is how it works. So anyone having this account or anyone sending data to this account can switch on or off LED sitting anywhere on real time. And it Firebase is quite faster. So now let us learn something about Blink. Is the PPT visible in full screen? Anyone from the team can come up on the stage and please confirm. Yeah, the PPT is visible. Hello. Hey folks. Yep, visible. Great. This is Blink. So will Rahul take over or may I explain? Okay, so this is slide अभी Arduino IoT वाली visible है, Blink वाली slide visible नहीं है. Okay. Stay. हाँ, ओके. सो बेसिकली जैसे हमने देखा कि Arduino IoT एक प्लेटफॉर्म है IoT का, ऐसे ही Blink एक प्लेटफॉर्म है एंड ये थोड़ा उससे पावरफुल है, बट इसमें सम फीचर्स आर पेड. ओके, सो इससे भी हम जैसे नोड MCU या फिर ESP32 कंट्रोल कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं. ये बेसिकली एंड ये भी एक एपीआई है, मतलब कि हमको पहले उसको नोड एमसीयू को वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये एक ऑनलाइन सर्विस है जिससे हम उसको ओवर इंटरनेट कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं. वैसे बेसिकली हम ओवर वाईफाई तो हम उसको डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकते हैं लाइट्स को, लेकिन अगर हमको चाहिए कि हमको दुनिया में कहीं से भी उसको कंट्रोल कर पाएँ, तो उसके लिए हम ब्लिंक या फिर आर्डिनो आईओटी या फिर ऐसे किसी एक प्लेटफॉर्म को लेते हैं. सो बेसिकली इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है. पहले तो हमको ब्लिंक पे एक अपनी आईडी बनानी पड़ेगी एंड उसमें फिर टेम्पलेट बनाना पड़ेगा कि हमको किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करना है. फिर हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. सो ये हमको प्रीमेड जो हमको ब्लिंक में ना प्रीमेड ऐप्स मिलते हैं जिससे हम इसको काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे ब्लिंक का हमारे पास वेब डैशबोर्ड भी है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो हमको इसमें अपना एक ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ब्लिंक के ऐप से ही कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को. So how does Blink works? So first of all, we have to make a Blink ID and Blink हमको Blink प्लेटफॉर्म पे उसके वेब ब्राउज़र पे हमको एक टेम्पलेट बनाना पड़ता है जिसमें हमको बताना होता है कि हमको क्या कंट्रोल करना है. जैसे हमको एक एलईडी कंट्रोल करनी है तो हमको उसमें एक एलईडी लगानी पड़ती है एंड उसमें हमको फिर हमको प्रोग्राम करना पड़ता है नोड एमसीयू जिसमें हम कंट्रोल करेंगे. जैसे हमको एक रूम की एक लाइट कंट्रोल करनी है ओवर द इंटरनेट कहीं से भी. सो हम पहले एक उसकी डैशबोर्ड पे एक टेम्पलेट बनाएंगे ब्लिंक के वेब ब्राउज़र पे. देन हम उसको अकॉर्डिंगली प्रोग्राम करेंगे नोड एमसीयू को. उसको हम आर्डिनो से ही प्रोग्राम करेंगे बट हम उसमें ब्लिंक की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट पेज. सो ये एक फिगर है जो दिखा रहा है कि हम उसको नेट से कैसे कनेक्ट होता है. ये
एंड ये जो साइड में फिगर है ये उसका वेब डैशबोर्ड है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड ये मोबाइल उसका मोबाइल ऐप है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये दोनों ही नेट से कनेक्ट होके फिर जो चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, सो ये लिंक है जिसमें गेटिंग स्टार्टेड लिख दे रखा है कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं इसका एक प्रोग्राम बना रहा था, मैं इसको थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ फिर। ओके, तब तक अनुभव सर में भी कुछ दिखा सकते हैं हमको। Yep. Hey folks, so just a minute. So I think I don't need this presentation. So let's go for some usual talks, right? So let me share my screen. Just a minute. So this is a hackathon. As you all know, the Hackmul is coming. So this is just a short announcement for Hackmul, essentially. So we have all our rules and regulations listed right here. But the one major thing that most of the freshers essentially are missing is like we have a main track. Main track is for anyone who is participating in like a open track for all, open for all thing. But we also have a fresher track. The fresher track obviously has all the essential in-kind goodies and prizes. It's all literally same for the freshers and main track, but the cash prizes are a bit different, obviously. So to be eligible for freshers track, you just need to have a team that is consisting of all the freshers, essentially from the first year, right? So if all your teammates are from the first year and you wish to like play safe, or you wish to like compete with only the first year, so you can opt for freshers track, right? And if you like have a really good idea and implementation, so you have learned a really lot of skills in the first year itself, you can essentially continue with the main track also. Like it's an option to switch, and we'll be circulating a form during submissions so that you can like opt for either fresher track or a main track. And essentially, these are the participation prizes for everyone. So we'll be broadcasting some community servers also. Those are great communities to join for, right? So, and for the special prizes one, we have two more editions. This is the Leading Learners expansion pack. So this will be given to anyone who is getting a special EdTech platform idea. Like there is a lot of boom in EdTech, be it like Byju's or stuff. They are making new innovations in EdTech. So if you are having some idea and you have implemented a prototype or maybe MVP for basic EdTech, you can go for this track. Or this is LNAI. They have some pre-built AI models and stuff that you can integrate to your application easily. And if you like make a good prototype out of LNAI, you will get the track prizes, right? So this was a quick announcement for hackathon. Let's continue with the normal flow. Yep. Thank you. Yep. So we are back with our awesome words. So we would like to motivate you all guys to keep building projects on a based on IoT. And गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन कि अगर कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, हम फिर उसको डिटेल में समझा देंगे।
Yes, so I hope we are good to go now. So we'll be rolling out the form to all those who have filled the registration form essentially to submit their ideas next week, and you can just submit an idea and stand a chance to get the hardware. The hardware we showed you. So we'll be making some cool kits for like basic projects. You will be able to like uh, build up stuff and play around with IoT and Arduino stuff with those kits, right? So we'll just roll out a form next week to all the emails those who have registered with the event essentially, and we'll just give away like two or three kits depending upon the quality of ideas essentially that we get, right? So take care, folks. Till that time, see you in the hack mode. ओके सो Thank you. ब्लिंक वाला प्रोजेक्ट हो गया, मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ अभी आपको. Yeah, sure, sure. ओके सो ये ब्लिंक का कंसोल है. जैसे अभी मैंने एक टेम्पलेट बनाया है IoT LED, जिससे मैं अपनी ऑन बोर्ड LED कंट्रोल कर पा रहा हूँ. आई गेस मेरा कैमरा विजुअल नहीं होगा. जैसे मैंने अभी ऑन की तो ऑन हो चुकी है. ये ब्लिंक की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जा सकते हो blink.cloud करके. वैसे ब्लिंक सर्च करके उसमें अपनी एक आईडी बना सकते हो एंड फिर उसमें एक टेम्पलेट बना सकते हो. टेम्पलेट बेसिकली क्या है कि जैसे IoT LED में मैंने एक LED लगाई है जिसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ. एक स्विच है, वेब ब्राउज़र भी स्विच है जिससे मैं ऑन ऑफ कर पा रहा हूँ. ओके मैं कैमरा दिखाता हूँ. ये नोड MCU बोर्ड है, इसमें भी आपको लाइट जलती हुई दिख रही होगी. अब जो मैंने डैशबोर्ड में आपको दिखाया था, मैं उससे बटन बंद किया तो लाइट बंद हो गई एंड ऑन किया तो ऑन हो गई. एंड ये मैं दुनिया में कहीं से भी कर सकता हूँ. सो बस इसको इंटरनेट एक्सेस चाहिए एंड देन आई कैन कंट्रोल इट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. हम LED की जगह इसमें रिले लगा के होम अप्लायंसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं. So we have a quote at the end that is like internet have changed the life from past. Internet of Things is going to change it all over again. So this is a very nice quote. Uh, and this picture also says 1,000 words, like everything can be automated, like we can just place hands in front of the tap and the water can be saved, just only the time, just only for the time we place our hands in front of the tap. And here we have Alexa that can control multiple devices, and which will help us in easily controlling all the appliances of our home. So buy doesn't mean that we are leaving you here. We will stay in touch. डिस्कॉर्ड पर भी डिस्कशंस डाउट्स IoT रिलेटेड डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा ज्वाइन कर लो, लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा. सो बाय folks.